और यार बार बार उसने जो स्लाइड शो पिक्चर को हाँ जी। गा रहा था ना, बार बार पिक्चर आती है फिर वो भी ऐसे फिर वो बहुत उसने अच्छी यार। एडिटिंग जो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू देसी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप? हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो को मजे से देख रहे होंगे। मैं हूं ऑर्गिनल, मैं हूं दसी फैमिली और पूरी दुनिया में हमें जहां तक देखा जा रहा है उन सबको हेलो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से। तो करते हैं आज हमारी जो वीडियो है वो रिएक्शन के लिए वीडियो है और आज हम इधर बैठ के वीडियो पे रिएक्शन देंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। जो आज की टाइटल है आज का वो है टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंग्लैंड यूके। लेट्स गो फॉर अ विजिट इन यूके। तो अभी हम इंग्लैंड को विजिट करने हैं, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, उसके बाद हम करेंगे इस पे रिव्यू। बाकी की बातें वीडियो के बाद में करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए आखिर तक। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शानदार हो गया यार, इतना सीन लगा रहा है। वाओ, टाइल लगाई उसने। England is a great place to visit, whether travelers are making their first or umpteenth trip abroad. First-time visitors may just want to hit the highlights in England, such as Westminster Abbey or shopping at Knightsbridge, London, and perhaps visit a university town or Stonehenge. The best places to visit in England truly offer something for everyone. Bath got its name because that's what it was when it was founded by the Romans in 60 AD, to build baths here because of the hot springs. It reached its popularity peak in the Georgian years when the wealthy flocked here for spas. Besides being famous for its waters, the city also is an excellent example of Georgian architecture. The city has an active cultural scene today, with live theatre and fine dining. Brighton, on the Sussex coast, has been a popular beach resort since the mid-19th century. Much of its popularity is due to the proximity to London, making it popular with day trippers. The beachfront is lined with graceful old Victorian homes that today provide tourist accommodations. Visitors will want to walk out on the famous Palace Pier or admire the traditional English gardens. Cambridge is an historic city about 50 miles north of London that is home to the University of Cambridge, one of the top universities in the world. It was founded in 1209, its students make up almost 20% of the city's 123,000 population. After touring the university, travelers may want to take a boat ride on the River Cam, visit the Fitzwilliam Museum with its huge collection of antiquities, or walk across the mathematical bridge that some claim is better than bridges in Venice. Fossil hunters may want to make a beeline for the Jurassic Coast, a section in southern England that runs roughly from Bournemouth to Exmouth. The rocks date back 185 million years to when the continents were crunching up against each other and then drifting apart. Museums along the way explain each region. Charmouth is the best place to find fossils. Fossil hunters and all visitors should take time to walk the beaches or visit the small charming towns along the way. The Lake District in northwest England's Cumbria is home to the country's largest national park. The mountainous region is known for hikes and mountain climbing. It's a popular tourist destination, attracting more than 15 million visitors annually. The park has the highest mountain in England, Scafell Peak, and the longest lake, Windermere. No superlative is too great when it comes to describing London.
the capital of England and the UK. This bustling city is history personified from Westminster Abbey to Buckingham Palace. Be sure to watch the changing of the guards. Shopping, from Knightsbridge to Carnaby Street, is a must, as is riding a red double-decker bus and a tube, or subway where one is constantly reminded to mind the gap. Oxford dates back to Saxon England when it was known as Axenophilia, or a place where oxen crossed a river. Today it is known as home to the oldest university in the English-speaking world, Oxford University, which dates back to the 12th century. This southeastern England town, the county seat for Oxfordshire, also boasts the remains of Norman castles, and the Christ Church Cathedral, a college chapel and cathedral rolled into one building. Located on the coast, St. Ives may be a former fishing town, but it still has the only port in southwestern England's Cornwall. Today this picturesque town of almost 12,000 is such a popular holiday resort it was named the best UK seaside town in 2010 and 2011. Comfortable walking shoes are a must to get up the hilly, narrow cobblestone streets that are lined with quaint buildings housing boutiques and art galleries. One of the most popular places to visit in England, Stonehenge is a prehistoric monument found in Wiltshire. From about 2500 BC, Neolithic and Bronze Age men started to bring gigantic stones from Wales and the Marlborough Downs. It was not until 1600 BC that Stonehenge came to be completed. A trip to Stonehenge is best combined with a trip to prehistoric Bury to the north, which has an even bigger stone circle, with fewer restrictions, and far fewer tourists. York is a walled city with a rich heritage located where the River Foss meets the River Rouse. Plenty of exciting sights compete for visitors' attention as they stroll along the city's cobblestone streets. One of the city's landmarks is York Minster. This commanding stone cathedral is filled with remarkable works of art. The medieval Clifford's Tower, which was built by William the Conqueror and rebuilt by Henry III in the 13th century, is a great vantage point for panoramic views around the city. एंड हो गया बार बार उसने जो स्लाइड शो पिक्चर को गा रहा था ना, बार बार पिक्चर आती है, फिर वो भी वो उसने एडिटिंग जो जिसने की है ना वो भी बहुत अच्छी थी, बैकग्राउंड म्यूजिक वो भी बहुत अच्छा था, व्यू जो उसने लिए हुए थे वो भी आज के बहुत ही कमाल के थे। उसके साथ वीडियो के ना नीचे जहाँ प्ले साथ में सब टाइटल लिखे आ रहे थे, नाम लिखा आ रहा था, हिस्ट्री आ रही थी, हाँ सब कुछ वाला मजा आया यार। एंड हो गया, इतनी अच्छी मूवी, ब्यूटीफुल, शानदार के दिल इतना अच्छा है कि ये पिक्चर देख देख के ना बहुत अच्छी, बहुत सीन ने पिक्चर इतनी शानदार बनाई हुई थी। तो वैसे इंग्लैंड भी बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरती का मुल्क है। तो इसके अलावा इसमें जो वो व्हील है वो बहुत ही फेमस है, इनका पॉपुलर है। तो बहुत सी इन्होंने पिक्चरें इसमें दिखाई हैं, जिसके मसलन वो पिक्चर पहली पिक्चर थी वो समंदर वाली पिक्चर भी इन्होंने बहुत अच्छी दिखाई है। जो इंग्लैंड है ना हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री के लिहाज से उसने बताई है, इतनी और चीजें हमने इसके बताई हैं। वो जहाँ पे वो स्टोन पड़े हुए थे इस शेप में, वो 16 BC की है। हाँ जी, बहुत पुरानी है यार, सब चाइल्ड से तो बहुत अच्छी वीडियो लगी है यार, इतनी अच्छी, बहुत अच्छी आज की जो हमारी वीडियो रही है। अभी हमने इंग्लैंड को विजिट किया, उसमें उन्होंने बताया यूनिवर्सिटीज बताई हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो भी हमने विजिट की है। लंदन के बारे में उसने बताया, लंदन बहुत ही मशहूर शहर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ओवरऑल ग्रेट टुडे वीडियो, बहुत अच्छी यार, फैंटास्टिक हो गई है। वी आल्सो एंजॉय दिस वीडियो लाइक यू। तो आपको भी हमारी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें और लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो नई आपको मिलती रहेगी अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो। तो अगली वीडियो के करें हमारा इंतजार। उम्मीद है कि हम जल्द वापस आ जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।